Hello students, how are you all? I'm sure you all are doing really good and enjoying your school life too. So children, let's begin with our next chapter, which is the earth and the solar system. Stepping up, solar system, structure of the earth, rotation and revolution and seasons. So in this chapter we are going about our universe, our solar system, what is the structure of our earth, how it rotates and revolves and about the seasons. इस चैप्टर में हम सोलर सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, हमारे अर्थ के स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे, कैसे ये रिवॉल्व करती है, रोटेट करती है और कैसे सीजन्स होते हैं. The earth is one of the planets of the solar system. Our solar system comprises of the sun and the 8 planets. Let us learn more about the earth in this chapter. So our planet earth is among 8 planets and all the 8 planets are the part of solar system. So all the planets rotates, revolves around the sun. तो हमारी जो प्लैनेट अर्थ है ये सोलर सिस्टम का ही एक हिस्सा माना जाता है और ये 8 प्लैनेट्स में आता है जो सन के आसपास क्या लगाते हैं, चक्कर लगाते हैं. Solar system, the sun along with the 8 planets is called solar system. There are 8 planets in our solar system which are revolving around the sun in their own path called their orbit. To learn the order of the planets around the sun, the following phrase can be used. So what is solar system? The sun and the other 8 planets are the part of this solar system. As I told you, the 8 planets are revolving around the sun, but they revolving on their orbit. To learn the order of the planet around the sun, we will follow the phrase. हमारा जो सोलर सिस्टम है इसमें सन भी है और 8 प्लैनेट्स भी है. तो सन इसका एक एक्सिस माना जाता है या सेंटर पॉइंट माना जाता है सोलर सिस्टम का, और बाकी के जो 8 प्लैनेट हैं वो सन के आसपास चक्कर लगाते हैं. अब ये चक्कर लगाते हैं तो आपस में टकराते क्यों नहीं है? तो ये टकराते इसलिए नहीं है क्योंकि ये अपनी एक दूरी पे, अपने एक ऑर्बिट पे ये चक्कर लगा रहे हैं. मैरी वेरी early made John sit under nets. The first letter of each word in the phrase is the same letter for the name of the planet, starting with the closest planet to the sun, i.e. Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. So if you want to understand the order of the planets, you have to just learn this, that Mary very early made John sit under net, because the first letter of each word is a phrase which is similar to the name of the planet. अगर आपको जो planet का sequence है, किस order में वो खड़े हैं हमारे solar system में, उसको पता लगाना है तो आपको ये phrase आपको याद रखना पड़ेगा कि Mary very early made John sit under nets. इसके जो पहले word है, पहले letter है, ये किसी न किसी प्लैनेट का फर्स्ट लेटर माने जाते हैं. तो इससे आपको आइडिया हो जाएगा. जैसे मैरी है मरकुरी, वेरी वीनस, अर्ली अर्थ, मेड मार्स, जॉन जुपिटर, सिट सैटर्न है, अंडर यूरेनस है और नेट जो है ये नेपच्यून है. तो इससे आप इजीली याद कर पाएंगे इसके ऑर्डर को. द 5 dwarf planets in our solar system are Ceres in the asteroid belt, Pluto beyond Neptune and 3 other dwarf planets, i.e. Makemake, Eris and Haumea. So there are 5 dwarf planets in our solar system which you can't see and which are not part of our solar system. So these are Ceres, Makemake, Eris, Pluto and Haumea. कुछ प्लैनेट ऐसे भी हैं जो ड्वार्फ हो चुके हैं, विलुप्त हो चुके हैं, या ये काफ़ी दूर है हमारे सोलर सिस्टम से, तो हम इन्हें अपने सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं मानते, लेकिन इनको हम ड्वार्फ प्लैनेट की कैटेगरी में रखते हैं. फर्स्ट मरकुरी, इट इज़ द स्मॉलेस्ट प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम. इट इज़ द क्लोजेस्ट टू द सन एंड हैज़ मोर क्रेटर्स देन एनी अदर planet. So Mercury is the closest planet to the solar system. मरकुरी जो है ये क्लोजेस्ट प्लैनेट माना जाता है हमारे सोलर सिस्टम का, और ये किसके क्लोजेट है? ये सन के काफ़ी क्लोजेट है. सेकेंड इज वीनस. इट इज़ द ब्राइटेस्ट प्लैनेट इन द स्काई. इट इज़ called morning or evening star because it is visible after sunset and before sunrise. It is the hottest planet in the solar system. It is similar in size to the earth.
So Venus is very closest, or you can say second closest planet to the sun. So it is hottest planet of our solar system, and it is the brightest planet of the sky, as you can see it after sunset and before sunrise. सेकेंड हमारा प्लैनेट है वीनस. ये काफ़ी हॉटेस्ट प्लैनेट माना जाता है क्योंकि मरकुरी के बाद ये ही सन के पास होता है. ये काफ़ी ब्राइटेस्ट प्लैनेट भी माना जाता है और ये कभी कभी विजिबल भी होता है, लेकिन ये पूरे दिन विजिबल नहीं होता है, ज़्यादातर सनसेट के बाद और सनराइज से पहले नज़र आता है. Third is Earth. The Earth is a planet with life. It is called a blue planet because 70% of its surface is covered with water. So Earth is our planet and Earth has life. Earth's 70% surface is covered with water. That's why it is called blue planet. हमारा जो अर्थ है जिसमें लाइफ सस्टेन करती है, इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि अगर आप इसे स्पेस से देखें तो ये ब्लू नज़र आता है क्योंकि इसका 70% जो हिस्सा है वो वाटर से ढका हुआ है. फोर्थ मार्स. इट इज़ द फोर्थ प्लैनेट from the sun. It is called the red planet because it has red soil on it. It is similar in the size to the earth. So Mars is similar to or kind of earth because it is similar in size to the earth, and it is called red planet because it is made up of a red colored soil. मार्स जो है इसे लाल प्लैनेट भी कहा जाता है, रेड प्लैनेट भी कहा जाता है क्योंकि इसमें जो रेड कलर की सॉइल जो है वो अधिक मात्रा में है और ये साइज़ में सिमिलर टू अर्थ, मतलब हमारी जो अर्थ प्लैनेट है उसी के सिमिलर है. फिफ्थ, जुपिटर. इट इज़ अ गैस जायंट, द लार्जेस्ट प्लैनेट in our solar system. It is 1300 times bigger than the earth. It is made up of hydrogen and helium gases. It has a red spot, a storm which is still active after many centuries. So Jupiter is the largest planet of our solar system. It is 1300 times bigger than the earth. So it is made up of hydrogen and helium gases, and it also has a red spot, a storm which is still active आफ्टर मैनी सेंचुरीज़. तो जो जुपिटर है ये हमारे सोलर सिस्टम का काफ़ी बड़ा, सबसे बड़ा प्लैनेट ये माना जाता है. ये हमारी अर्थ से 1300 गुना बड़ा है और ये बना हुआ है हाइड्रोजन और हीलियम गैस से. 6. Saturn. It is a gas giant with prominent rings around it. It is made up of ice chunks and clouds. It has 7 main rings. Saturn is made up of liquid and gases. Its rings are visible through a telescope. So Saturn is also a giant gas giant with prominent rings. As you can see, a ring-like structure around the Saturn, which is nothing but group of small stones, gases, etc. Saturn जो है ये भी लार्ज ही माना जाता है, लार्ज एक तरह का प्लैनेट माना जाता है और इसके आसपास आपने रिंग भी देखी होगी. ये रिंग जो है ये काफ़ी सारी गैसेस की, छोटे छोटे स्टोन्स की बनी हुई है और ये इसी के चारों तरफ रहती है. 7th, Uranus. It is the coldest planet in the solar system. It is tilted on its side. It spins on its side with its axis pointing towards the sun. So Uranus is the coldest planet as it is far away from the sun and it is tilted on its side. यूरेनस जो है ये कोल्डेस्ट प्लैनेट माना जाता है सोलर सिस्टम का. क्यों? क्योंकि ये सन से बहुत दूर है, तो सन की जो हीट है ये इस तक बहुत देर से पहुंचती है या बहुत कम पहुंचती है. 8th, Neptune. This planet is the farthest from the sun. It is a very windy and cold planet. It is blue in color. So the last planet is Neptune and it is also cold because it is also far from the sun and it is blue in color. Last planet जो है ये Neptune है, ये भी काफ़ी cold है क्योंकि ये sun से काफ़ी दूर है और ये windy भी है. Till 2006, Pluto was a planet. However, in August 2006, the International Astronomical Union redefined the planet and Pluto was excluded from the planet of the solar system. It is now defined as a dwarf planet because of its size and distance from the sun. Apart from this, the solar system also contains satellites. So, till 2006, there were 9 planets in the solar system. Pluto was the part of solar system, but in August 2006, it was redefined.
they redefined the planet and Pluto was excluded from the solar system. Now we see there are some satellites there also in our planet or you can say the solar system. तो जो प्लूटो है वो भी पहले 2006 तक सोलर सिस्टम का हिस्सा हुआ करता था और हम पहले 9 प्लैनेट्स गिना करते थे क्योंकि हम प्लूटो को भी काउंट करते थे, लेकिन 2006 के बाद जो इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन रीडिफाइंड है उन्होंने प्लूटो को हटा दिया क्योंकि ये सन से काफ़ी दूरी पे था और ये काफ़ी ड्वार्फ था, काफ़ी छोटा था, इसलिए इसे हटा दिया गया। तो अब 8 प्लैनेट्स ही रह गए हैं और हमारे सोलर सिस्टम में कुछ सैटेलाइट्स भी हैं। Take break, focus, attention base. Name the following in our solar system. Planet closest to Sun. It is Mars. Planet farthest from the Sun. It is Neptune. The red planet. It is Mercury. The bright blue-green planet. It is our planet Earth. The planet with the largest number of moon. It is Jupiter. तो यहाँ पे कुछ टर्म्स हमें दी गई हैं, इनके हम आंसर देख लेते हैं। प्लैनेट जो सन के पास है उसे हम क्या कहते हैं? मार्स। प्लैनेट जो सन से बहुत दूर है उसे हम कहते हैं नेपच्यून। रेड प्लैनेट हम कहते हैं मरकुरी को। ब्राइट ब्लू ग्रीन प्लैनेट ये हमारे अर्थ है और प्लैनेट जो काफ़ी लार्जेस्ट नंबर ऑफ मून के साथ आता है उसे हम कहते हैं जुपिटर। नाउ satellites, an object that revolves around a planet in its own orbit is called a satellite. Most planets have satellites that revolves around them. The satellites are of two types: natural satellites, man-made satellites. So satellites are some heavenly bodies which rotates around those planets, so they are called satellites. So satellites are of two types: natural satellites and man-made satellites. सैटेलाइट्स एक ऑब्जेक्ट होते हैं जो किसी प्लैनेट के आसपास क्या करते हैं? चक्कर लगाते हैं अपने ऑर्बिट में, ठीक है। ये दो तरीके के होते हैं, एक नेचुरल होते हैं और एक मैनमेड होते हैं, जिनको हम डिटेल में जानेंगे। Natural satellites, the satellite of the planet that are present naturally, are called natural satellite. The moon is the only natural satellite of the earth. Moon does not have an atmosphere to protect it from the meteorites from the space. Thus, it is full of craters. The moon takes about 29 days to move around the earth and same time to rotate on its axis. So, our earth's natural satellite is moon. It rotates or you can say revolve around our planet earth. So, moon does not have any atmosphere, so lots of meteorites attacked on them and it became lots of craters. Moon takes 29 days to move around the earth. नेचुरल सैटेलाइट में मून आ जाता है। मून जो है किसका नेचुरल सैटेलाइट है? हमारी अर्थ का सैटेलाइट है ये नेचुरल, ठीक है। और ये हमारी अर्थ के आसपास क्या करता है? चक्कर लगाता है और एक चक्कर कंप्लीट करने में ये 29 डेज का समय लेता है। Now do you know moon causes tides in the ocean on the earth due to its gravitational pull. सो मून जो है ये टाइड्स को, लहरों को काउज करता है ओशियन में, क्योंकि अर्थ में क्या होती है? ग्रेविटेशनल फोर्स होती है। Second, man-made satellites. The man-made satellites are also called artificial satellites. They are sent in the space by humans. Sputnik 1 was the first satellite to orbit the Earth. It was launched by Russians in October 1957. Artificial satellites are used for communication, television, telephones, wireless, weather forecast, and for observing the space. So, man-made satellites are those satellites which are made by man and which are sent to space by human. So, Sputnik 1 was the first satellite which was sent to space for very first time to take the information of the space and also for research. तो मैन-मेड सैटेलाइट्स जो हैं ये ऐसी सैटेलाइट्स होती हैं, आर्टिफिशियल सैटेलाइट्स जो मैन ने बनाई हैं और ये भेजी जाती हैं स्पेस पे ताकि वहाँ की इन्फॉर्मेशन ली जाए और वहाँ के बारे में रिसर्च वगैरह की जा सके। तो स्पुतनिक 1 जो थी वो पहली सैटेलाइट थी जो भेजी गई थी स्पेस पे। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ. अर्थ इज़ द ओनली प्लैनेट in our solar system with life. The different forms of life on earth are plants, animals, insects, birds, humans, etc. Earth was formed from cloud of dust and hot gases billions of years ago. The earth is made up of 3 layers:
core, mantle and crust, after about which we are going to discuss. So earth is the planet where we see the life sustaining products, like we see plants, we see air, we see water, we see land here. Earth was formed from the cloud of dust many years ago. Now earth has three layer, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. तो अर्थ जो है ये एक ऐसा प्लानट है जहाँ पे लाइफ सस्टेन करने के लिए बहुत सारी चीज़ें हमें मिल जाती है. हमें यहाँ पे एयर भी मिलती है, वाटर भी मिलती है और सैंड भी मिलती है, जो कि जीने के लिए बहुत ही उपयोगी मानी जाती है. बहुत साल पहले जो अर्थ थी वो क्लाउड ऑफ डस्ट और हॉट गैसेस से बनी थी, लेकिन धीरे धीरे ये अर्थ की फॉर्म में कन्वर्ट हुई. इसके बाद इसमें लेयर हमें देखने को मिलती है, कोर, मेंटल एंड क्रस्ट. Core, the innermost layer of the earth, is called the core. It is made up of minerals like iron and nickel. The core is divided into solid inner core and molten outer core. The temperature of the inner core is about 4000 degrees Celsius. So the inner layer, the innermost layer of the earth is called core, and it is made up of many minerals like iron and nickel. And further it is divided into two parts, solid inner core and molten outer core, and which is very hot, like the temperature of the inner core is about 4000 degrees Celsius. तो जो कोर है ये अर्थ का सबसे अंदर वाला पार्ट ये माना जाता है, और इसमें आपको मिनरल्स मिल जाते हैं, आयरन एंड निकल, और ये काफ़ी ज़्यादा गर्म होता है. Second, mantle. The middle layer of earth is called mantle. It is rich in minerals such as iron and magnesium. So the middle layer of earth is mantle, and it is rich in minerals like iron and magnesium. जो मिडल वाली लेयर है हमारी अर्थ की वो मेंटल है, और इसमें भी आपको बहुत सारे मिनरल्स देखने को मिल जाएंगे जैसे कि आयरन एंड मैग्नीशियम. Third, crust. The outermost layer is called crust. It consists of rocks. Most of the living organisms live on this layer. So the outermost layer of the earth is crust, and it is made up of so many rocks, and most living organisms live on this layer. जो बाहरी वाली परत है वो क्रस्ट कहलाती है, और ये रॉक्स की बनी हुई है. यहाँ पे आपको बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स देखने को मिल जाएंगे. रोटेशन एंड revolution. The earth moves on its own axis. This movement of earth on its axis is called rotation. The earth's axis is an imaginary line from north pole to the south pole running through the center of the earth. The axis is tilted at an angle of 23.5 degree. The rotation of the earth causes day and night on the earth. The earth takes 24 hours to complete the rotation. The earth moves around the sun on a fixed part called the orbit. This movement of earth around the sun is called revolution. It takes around 365 days and 6 hours to complete one revolution around the sun. This makes 1 year on the earth. Every 4 years, 1 day is added to compensate for 6 hours. This is called the leap year with 366 days. So our planet Earth rotates on its axis, which occurs day and night, and it takes 24 hours to rotate on its axis. It also rotate, or you can say revolve around the sun, and it revolves around the sun in a fixed orbit. So it takes 1 year, or you can say 365 days and 6 hours to complete one revolution. So it takes 1 year to complete one revolution. Every 4th year, 1 day is added to the 4th year to compensate 6 hours, and this is called leap year. अर्थ जो है ये अपने एक्सिस पे भी मूव करती है और सन के आसपास भी ये चक्कर काटती है. तो अपने एक्सिस पे जब ये मूव करती है तो 24 घंटे का समय ये लेती है, जिससे दिन और रात दोनों होकर के एक पूरा दिन बनाते हैं. जब ये सन के पूरा चक्कर लगाती है, अब सन तो काफ़ी बड़ा है, तो उसका जब ये पूरा चक्कर एक लगाती है तो पूरा एक साल जो है वो कंपनसेट होता है, या वो पूरा साल जो है वो कन्वर्ट होता है या पूरा होता है. Seasons. The tilting of the earth on its axis and revolution around the sun causes seasons on the earth. Earth also has another imaginary line at the center called the equator.
It divides the earth into two equal parts, the northern hemisphere and the southern hemisphere. So our earth is tilting on its axis, so that's why it revolves around the sun and it revolves on its axis too. So when it revolves, it occurs the seasons on both the hemisphere. अर्थ जो है ये थोड़ी सी टिल्टेड है, ठीक है, थोड़ी सी टेढ़ी है और ये अपने एक्सिस पे रहती है, ठीक है, और इसी टिल्टेड वे में ही ये चक्कर लगाती है और ये घूमती है। अर्थ के दो इमेजिनरी लाइन है जिसको हम इक्वेटर कहते हैं, मतलब ये इसको दो पार्ट्स में डिवाइड करता है, एक होता है ऊपर वाला नॉर्थन हेमिस्फीयर एंड नीचे वाला साउथर्न हेमिस्फीयर। The hemisphere which tilts towards the sun during the revolution gets the summer season, and other hemisphere at that time period has winter. For example, if India in the northern hemisphere has summers, then Brazil in southern hemisphere has winters. तो ये जो हेमिस्फेयर है ये जो टिल्टेड रहता है सन की तरफ ड्यूरिंग रिवोल्यूशन, तो यहाँ पे क्या होता है, समर्स होते हैं, समर सीजन्स होते हैं, और जो दूसरी तरफ का हेमिस्फेयर होता है उस टाइम पे वहाँ पे विंटर्स चल रहे होते हैं। सपोज़ अगर हमारा इंडिया जो है वो नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है तो उसमें अगर विंटर्स हो रहे हैं, अगर साउथर्न हेमिस्फेयर में ब्राज़ील है तो वहाँ पे क्या हो रहे होंगे, समर्स हो रहे होंगे। Chapter cover up the sun and 8 planets which revolves around the sun and the dwarf planets make the solar system. The 8 planets in our solar systems are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. The dwarf planets are Ceres, Pluto, Makemake, Eris and Haumea. An object that revolves around a planet in its orbit is called its satellite. Moon is the natural satellite of the Earth. Earth rotates around its axis in 24 hours and revolves around the sun in 365 days and 6 hours. Every fourth year is a leap year which has 366 days to compensate for the extra 6 hours. So children, in this chapter we have learned about our planet, how the sun and 8 planets are the member of this planet or this solar system. So we have 8 planets in our solar system which revolve around the sun on their orbit, and also we have learned about 5 dwarf planets. Pluto is among them. Moon is a natural satellite of Earth, and there are some other man-made satellites also which have made by men and which are sent to space for research and get information about the space. So children, इस चैप्टर में हमने पढ़ा हमारे सोलर सिस्टम के बारे में, जो सन है और जो 8 प्लैनेट है वो कैसे सोलर सिस्टम का हिस्सा है। हमने ड्वार्फ प्लैनेट्स के बारे में भी जाना जिसमें प्लूटो एक है। साथ ही साथ हमने नेचुरल सैटेलाइट एंड मैनमेड सैटेलाइट के बारे में भी जाना। मून जो है नेचुरल सैटेलाइट है हमारी अर्थ का, और कैसे अर्थ जो है रोटेट करती है अपने एक्सिस पे और एक दिन वो पूरा करती है, और कैसे वो सन के आसपास चक्कर लगा के एक पूरा साल कंप्लीट करती है। नाउ थिंक एंड आंसर बेस्ड ऑन NEP 2020. A. Tick the correct answer. Which of the following is a dwarf planet? Option A Mercury, option B Venus, option C Pluto and option D Saturn. So the correct answer is Pluto. Pluto is a dwarf planet which is no more a part of our solar system. Second, which of the following planet is closest to the sun? Option A Earth, option B Jupiter, option C Uranus and option D Neptune. So among these planets, Earth is closer to Sun as compared to Jupiter, Uranus and Neptune. तो इनमें से अगर बात की जाए तो सन के नज़दीक जो प्लैनेट है वो अर्थ है। मून इज़ द नेचुरल सैटेलाइट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट्स? ऑप्शन ए अर्थ, ऑप्शन बी मर्कुरी, ऑप्शन सी सैटर्न और ऑप्शन डी नेपच्यून. So our moon is a natural satellite of our earth. So you will take option A. Fourth, which of the following is the innermost layer of the earth? Option A mantle, option B solid core, option C liquid core or option D crust. So the correct answer is liquid core because it is the innermost layer of the earth. Fifth, movement of the earth on its axis is called option A rotation, option B seasons, option C both, option D none of these.
So when Earth rotates on its axis, it is called rotation. So you will write rotation here. B, fill in the blanks. The Earth takes a dash to complete its revolution around the Sun. So the Earth takes 1 year, or you can say 365 days, 6 hours to complete its revolution around the Sun. Second, the seasons occur due to Sun. The layer of the Earth on which we live is called crust. Fourth, the dash is the innermost layer of the Earth. So it is core. Core is the innermost layer of the Earth. Fifth, Moon is the natural dash of the Earth. What is this? It is our natural satellite. C, state whether the following statements are true or false. Planets have their own light. No, it is not true. It is false. First, planets have their own light. It is false. Second, the movement of the Earth around the Sun is called revolution. It is true. Earth has its own natural satellite of its own. It is false. Moon is the natural satellite of Mercury. It is false. It is the satellite of our Earth. Earth moves on its own axis. It is true. Now D, answer the following questions. What are the advantages of artificial satellites? Man-made satellites are also called artificial satellites. They are sent in space by humans. Sputnik 1 was the first satellite to orbit the Earth. It was launched by Russian in October 1957. Artificial satellites are used for communication, television, telephone, wireless, weather forecast, and for observing the space. Second, explain how day and night form using a diagram. So you have to make a diagram where you have to mention or explain how day and night forms. So the rotation of Earth causes day and night on the Earth. The Earth takes place, the Earth rotates, or Earth takes 24 hours to complete one rotation. So you will make a diagram here to explain how day and night occur. Third, what causes seasons on the Earth? So the tilting of the Earth on its axis and revolution around the Sun causes seasons on the Earth. Earth also has an imaginary line which is called equator, and which divides the Earth into two parts, the northern hemisphere and the southern hemisphere. Fourth, what is a solar system? Name all the planets. So the Sun along with the 8 planets is called solar system. There are 8 planets in our solar system which are revolving around the Sun. So the solar system, the Sun and the other 8 planets are Mercury, Venus, Earth, Mars, Jupiter, Saturn, Uranus and Neptune. Fifth, what is the axis of the Earth? How does it help? So you have to mention the Earth moves on its own axis. It moves on of the Earth on its axis is called rotation. The Earth's axis is an imaginary line from North Pole to the South Pole running through the center of the Earth. The axis is tilted at an angle of 23.5 degree. Out of the box critical thinking: if the Earth did not rotate but only revolve around the Sun, what would have happened? Why Mercury is considered the hottest planet? So 2 activities are given here. You have to tell, if Earth did not rotate but only revolve around the Sun, what would happen? So you have to discuss it with your friend and classmate and you have to tell the answer. And second activity is, why Mercury is called or considered the hottest planet? So you have to find out the answer. आपको यहाँ पे 2 एक्टिविटी करनी है. पहले आपको एक सिचुएशन दी गई है कि अगर अर्थ जो है वो सिर्फ सन के आसपास चक्कर लगाए, अपने एक्सिस पे वो नहीं घूमे, तो क्या होगा, और मरकरी को हॉटेस्ट प्लैनेट क्यों कहा जाता है. तो ये अपने फ्रेंड के साथ डिस्कस करेंगे और इसका आंसर आप पता लगाएंगे. Now crosslinks, physical media development. Mark the following countries on a map. Also mention on which hemisphere they are present. Belgium, China, Denmark, India, Egypt, Japan, the United States of America, England. So you have to take a map and you have to mention
all these countries and also mention where on which hemisphere they are present. आपको क्या करना है, यहाँ पे कुछ कंट्रीज आपको दी गई हैं, ठीक है, इन कंट्रीज को आपको वर्ल्ड का मैप लेकर के उसे क्या करना है, मार्क करना है, और आपको साथ ही साथ मेंशन भी करना है कि कौन से हेमिस्फीयर में ये प्रेजेंट हैं. So children, I hope you understood the chapter very well. Now you will revise the chapter and practice the given exercise to understand the chapter thoroughly.